चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बल पंजाबी न्यूज़ 'ਚ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਰੀ, 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਮੌਲੇਦਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ। एलन मस्क का वड्डा ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट तो हटाई जाएगी पाबंदी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। बीते 24 घंटिया दौरान पश्चिमी आस्ट्रेलिया च कोरोना के 12,390 नवे मामले दर्ज किए गए हैं। इस दे नाल ही अधिकारियों वालों 6 मौतों की पुष्टि भी की गई है। इन्हां अंकड़ियां विच रैपिड एंटीजन टेस्टां के 9,511 नतीजे ते पीसीआर टेस्टां के 2,879 नतीजे शामिल ने। इस दौरान राज भर च कोरोना मरीजों की गिनती 61,775 हो गई है। सूबे के हस्पतालों में 286 कोरोना मरीज दाखिल ने, जबकि इन्हां विचों 8 मरीज ICU विच ने। क्वीनसलैंड के ज्यादातर हिस्सों में मौलेदार मींह के चलदे हड़ां के हालातों का मुड़ तो सामना करना पै सकता है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। बीती रात ही राज के उत्तर पश्चिमी खेतर विचाले माउंट ईसा विचों एक 20 साला व्यक्ति नूं हड़ के पानी विचों बचाया गया। उक्त व्यक्ति नूं माउंट ईसा के हस्पताल विच दाखिल करवाया गया, जिथे कि उसनूं हाइपोथैर्मिया नाल पीड़ित ऐलानिया गया, परंतु उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। दस दें कि इस दौरान सरीरक तापमान घट जाता है। ज्यादातर चेतावनियां राज के मध्य और उत्तर खेतर विच जारी की जा रही ने। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने कहा है कि वह अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ते लगी ट्विटर की स्थाई पाबंदी नूं वापस लै लैणगे। ट्विटर की प्राप्ति योजना नूं अमली जामा पहना रहे मस्क ने कारां दे भविख बारे आयोजित एक सम्मेलन नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधित करते हुए यह गल कही। मस्क ने कहा कि ट्विटर वालों ट्रंप ते लगाई गई पाबंदी नैतिक तौर पर बुरा फैसला सी। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनी के इस फैसले नूं बेहद बेवकूफी वाला करार दिता। उन्होंने कहा कि ट्विटर वालों अकाउंट ते स्थाई पाबंदी दुर्लभ स्थितियों में होनी चाहिए है ते अजिहे कदम उन्होंने अकाउंट लिए चुके जाने चाहिए ने जो गड़बड़ी करने वाले या एनीमेटेड बोट ने। जिक्र है कि अमरीकी संसद भवन च पिछले साल 6 जनवरी नूं बदमाशां दे जबरदस्ती दाखिल होने की घटना तो बाद ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट से पाबंदी लगा दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने वड्डे भरा ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दे सुप्रीमो नवाज शरीफ नूं मिलण लई लंडन रवाना हो गए ने। सूत्रां अनुसार नवाज शरीफ नूं पार्टी लीडरशिप नाल कुछ अहम मुद्दों ते सलाह करन दी लोड़ है, जिस ते उन्हां नूं इतराज है ते PMLN वालों वड्डा फैसला लैण दी उम्मीद है। यही कारण है कि उन्हां ने इस मुद्दे ते ऑनलाइन मीटिंग करन दे विचार नूं रद्द कर दिता। संभावित मुलाकात बारे पत्रकारां नाल गलबात करदे नवाज ने कहा कि वह मौजूदा स्थिति के नाल पाकिस्तान के सामने आने वाले राह बारे भी चर्चा करेंगे। ब्रिटेन ते यूरोपीय संघ विचाले ब्रैग्जिट नूं लैके फिर तो टकराव होया है। ब्रिटेन ने धमकी दी है कि वह यूरोपीय संघ नाल व्यापारक समझौते के कुछ हिस्सों नूं खत्म कर देगा। ब्रिटेन का कहना है कि यह नियम उत्तरी आयरलैंड विच नवी सरकार के गठन से रुकावट बन रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज टर्स ने कहा है कि जेकर सरकार EU नाल समझौते ते पहुंचण च असफल रहिंदी है तो सरकार कार्रवाई करन तो पीछे नहीं हटेगी। दूजे पासे यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि कानूनी रूप से बाइडिंग समझौते ते मुड़ गलबात का कोई विकल्प नहीं है। नियमां नूं एक पासड़ ढंग नाल बदलण लई ब्रिटेन द्वारा चुकिया गया कोई भी कदम कानूनी कार्रवाई ते व्यापार युद्ध नूं वधा सकदा है। ओंटारियो चोणां नूं लैके हुण लिबरल पार्टी के आगू स्टीवन डेल डूका ने भी अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म ऐलान दिता है। इस मौके लिबरल पार्टी ने ओंटारियो वासियों नूं लुभाउण दा काफी यतन किया है। इस बार अपने प्लेटफॉर्म विच उन्हां लॉन्ग टर्म केयर, चाइल्ड केयर, हाउसिंग ते हैल्थ संबंधी काफी ध्यान दिता है। लीडर स्टीफन ने इस मौके होर भी कई अहम मुद्दों उत्ते विचार साझे किए ने। Seniors who've witnessed unspeakable challenges during this pandemic. I think about how the Ford conservatives want to double down on a failed system and continue to reward for-profit long-term care while eliminating the liability for the worst performers in that sector. I think about the environment. I think about the air that we breathe and the water that we drink and how we want to protect our green spaces and how we face challenges in that area. I think about hard-working families.
You see the cost of everything skyrocketing in the wrong direction right now, skyrocketing in the wrong direction for 4 straight years under Doug Ford and his friends. The cost of groceries, the cost of pretty much everything else, including buying or renting a home in this province of ours. These are just some of the challenges that we face, and we need to make sure that we are listening, that we are learning, and particularly learning the lessons during COVID. And again, let me just stress, the Ontario Liberal Plan, A Place to Grow, is making choices, specifically making choices that will make your lives better, that will make everyone's life more affordable. So when I talk about students, I think about the fact that we will cancel Highway 413 once and for all, and we will invest that money in our public schools. I think about our seniors, and I'm so delighted to once again say we will deliver a home care first guarantee, and we will end for-profit long-term care in this province. I think about our hard-working families, those who are struggling, despite the fact they keep showing up, falling further and further behind. That's why we will deliver Buck a Ride province-wide and 8% off prepared foods under $20 to make your life more affordable everywhere you go in this province of ours. And I think about our workers and their families, people like my grandfather Alfonso, who came here in 1951, worked so hard but was injured on the job. Despite the fact that he tried his best, it was such a struggle. And it's a struggle for too many workers in this province today because Doug Ford is determined to drag us backwards. That's why we will deliver. We will deliver paid sick leave, and we're going to deliver a real living wage, and we'll put workers and their families at the center of the decisions that we are going to make. ब्रैम्पटन नॉर्थ तो प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार गरहैमी ਮਕਰੇਗਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਗਰਹੈਮੀ ਮਕਰੇਗਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ। First of all, a round of applause for Graham McGregor. He's been working so hard over the last few months, door knocking every single day. Every time I call him, he picks up the phone. He's like, Baji, quick, I'm at the door, I'm at the door. So Graham's a really hard-working guy. He deserves this. I've known him from way back in the days when me and him just used to knock on doors for other candidates. And I can assure you that he is an amazing voice. He's somebody who works hard. He's somebody who's building hospitals, spreading the message of building our next university, and spreading the message of building our next highway. These are all very important things for Brampton. As Premier Ford just recently announced a little while ago, the multi-billion-dollar investments in the auto sector, especially the Brampton Chrysler plant. We saw over the last couple of years that the fate was uncertain, and Premier Ford put that commitment forward. Stellantis has put in another $1 billion into Chrysler in Brampton, making more jobs for Brampton. And a round of applause, please, for that. But as these jobs come in, that's going to mean we're going to need more infrastructure to support and transport these goods and get these goods to market faster, which is why we need Highway 413. All the other parties think that Brampton already has enough, and we know that Brampton needs more. We need this highway. Let's stop wasting time in traffic. Let's spend that time with our loved ones. Let's use that time getting those goods to market, and together, let's turn all of Brampton blue. Prabhat Sarkaria and Amarjot Sandhu have done a wonderful job over the last 2 years advocating for Brampton, and we hope to strive to work at the same level and bring Brampton's voice down to Queen's Park. So with that being said, thank you so much everyone for being here. Thank you for supporting my brother Graham. Thank you for supporting me. Thank you for supporting Prabmeet and Amarjot. Together, we would like to be Brampton's voice in Queen's Park, and we can only accomplish that with your support. Thank you so much. ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਮ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ 413 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਗ੍ਰੈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਦਾ ਕੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਭੇਜੀ ਹੈ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं मुरारी लाल थपलियाल आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्रैम्पटन नॉर्थ से ग्राहम को सपोर्ट करें। ये टाइम है चेंज का और इस समय एनडीपी ने जो डैमेज किया है लिबरल के साथ मिलके उसको रिपेयर करने के लिए ओंटारियो पीसी पार्टी का आना ज़रूरी है। ब्रैम्पटन वेस्ट से अमरजोत संधू, ब्रैम्पटन साउथ से प्रमित सरकारिया, शर्लिन ब्रैम्पटन सेंटर से, ईस्ट से हरदीप ग्रेवाल एंड वंस अगेन नॉर्थ से ग्राहम को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि प्लीज़ जून 2 2022 को ओंटारियो पीसी पार्टी डगफोर्ड की सरकार को फिर से लाएं, फिर से निर्वाचन करें। थैंक यू सो मच। Just if you got office opening today. Hello ji, sat shri akal, namaskar. Mitwa da Brampton North to PC Party to Umidwar Graham McGregor. We just had our campaign office opening here. The energy was electric. People are excited to get Premier Ford in for another 4 years. I mean, when we talk about investment and getting investment to our city, new Highway 413 is going to save commuters 30 minutes on their trip. It's going to bring in $350 million of GDP to our local economy, 8,000 construction jobs while under construction. Peel Memorial, you know, this is a hospital that the Liberals shut down in 2007. They turned their back on Brampton. PC Party under Doug Ford's leadership is going to bring it back. We're going to get it done. 250 beds with room for 100 more, full 24/7 service, full emergency room, and the medical school. 175 positions for doctors to get trained right here in Brampton. Some of the kids, some of the bache that want to grow up and become a doctor, they can do that right here. So the energy is big. People are excited. They want to say yes to the Ontario PC Party. And I'd remind everybody on June 2nd, please vote in Doug Ford, myself, the other Brampton candidates right here in Brampton with the Ontario PCs. For all the volunteers who have done the hard work. So the last one, we're going to do the ribbon cutting. Before that, I will request Philip Power, the power behind Graham's campaign, to say a few words for closing remarks. Thank you. Philip, please come in. Then we're going to do the ribbon cutting. Thank you. Thank you everyone for coming in. There is abundance of... ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕੈਰੀ ਲਾਈਨ, ਫਿੰਡਲੇ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। Thank you, Mr. Speaker. We know that our Special Forces King Air Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Platform was monitoring the truckers' convoy protest on Parliament Hill. The Prime Minister has called it a training flight. If the government was prepared to send up ISR aircraft over the protest, what was it doing to gather intelligence on the ground? Because one doesn't engage one without the other. My question is, what was the coordination between public safety, national defence, Canadian Forces, Privy Council and the Prime Minister's office during the protest? The Honourable Minister of National Defence. Mr. Speaker, I'd like to reiterate what the Prime Minister said last week a number of times for my honourable colleagues' benefit. The flight in question was part of a Canadian Armed Force training exercise that was planned prior to and was unrelated to the convoy protest. The training had nothing to do with the convoy blockade, Mr. Speaker, and we'll continue to reiterate that fact. Thank you. The Honourable Member for, we'll do this again, South Surrey White Rock. Mr. Speaker, we know a Special Forces surveillance flight took place. We know the government even let the health agency spy on Canadians' liquor habits during COVID. The Prime Minister has called it a training exercise. What does the government think an ISR does for training? Just fly around in circles? It gathers intelligence, surveillance and reconnaissance over that target, and that target clearly was the protest. Two questions. Who was that reconnaissance platform reporting to when gathering intelligence on Canadians, and what special policing authorities were granted to Canadian Forces at that time? Good question. The Honourable
Honourable Minister of National Defence. Mr. Speaker, I'd like to reiterate that the assumptions underlying that question are misguided. Again, the Canadian Armed Forces flight was part of a training exercise. The exercise was planned prior to and was unrelated to the presence of the protesters and the convoy. The opposition doesn't seem to appreciate or like this point, Mr. Speaker, but it is the truth. Thank you. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ ਸਾਲ 2020 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। So while our work to confront COVID-19 continues, it is clear that we have made progress. And after extensive consultation with city officials, I have determined we no longer need to maintain in place the emergency declaration I signed in March of 2020, the first ever declared in the history of our city. So this morning, I signed a document at 7:30 this morning, officially terminating the emergency declaration in Toronto. The city had been operating under this emergency declaration for 777 days. It came into effect on March 23rd, 2020. The declaration signaled our intent to fight COVID-19 with everything we had. And now, 2 years, 1 month and 17 days later, and more than 7 million doses of vaccine later, there is no doubt that our collective efforts have been successful in getting us to a better place. And I say a better place because we have to remind ourselves all the time the terrible toll this took on people with lives lost, loved ones lost, people who got very ill and haven't been able to enjoy a full recovery. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।